कैसे लगे एग्जाम्स के प्रिपरेशन बात करते हैं आज पोइट्री सेक्शन में। तो पोइट्री में वी आर वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पोइट्री फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम। सर ये पेपर के पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट पोइट्री तो ये हमें आनी चाहिए। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैसे क्लियर करने, एज व्हेन आई बीन सही कि यार पेपर में कौन सी पोइट्री आनी है, मैं इस पोइट्री को जरूर मेंशन करता हूँ। तो आज इस पोइट्री को कर लेते हैं एंड आई रियली वांट यू गाइस टू हैव दिस टेस्ट विद यू। आपके पास ये टेस्ट होना चाहिए। सर कौन सा टेस्ट? आई रिपीट, दिख रहा होगा पूरा, लुकिंग फॉर अ कजन ऑन अ स्विंग। के रामानुजम। अच्छा के रामानुजम की बात करते हैं। सर पोइट्री उसने लिखी है, आप उसने किन चीजों को हाईलाइट किया, कौन से कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, ये सारी चीजें तसल्ली क्लियर करेंगे। तो सर कैन यू शो दिस ऑन द साइड? डेफिनेटली जल्दी अपलोड करूंगा, मैं खुद को मॉडिफाई करूंगा कि मैं ये चीजें दिखा पाऊँ आपको। फिलहाल तो मैं सिंपल सा वे आउट करता हूँ जैसे मैं अपनी पोइट्री समझाता हूँ। हाँ, इस बार मैं पूरी पोइट्री नोट्स के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज ऑन टिक हो जाए। तो पहले पोइट्री को समझते हैं। लुकिंग फॉर अ कजन ऑन अ स्विंग, व्हेन शी वाज 4 or 5 she sat on a village swing. So who was 4 or 5? When she was, तो पहले क्लियर करते हैं, यहाँ पे जो पोइट है ही इज अ मेल, तो वो अपनी कजन के बारे में बोल रहा है। एंड ऑन द टाइम शी वाज 4 or 5, when she was 4 or 5 she sat on a village swing and her cousin 6 or 7 set herself against her. Against शॉर्ट ऑफ जफ्फी पाके बैठे हुए, दो बच्चे हैं छोटे, जफ्फी पाके बैठे हुए हैं। अब हमने जफ्फी क्या होती है, दे आर मेकिंग अ हग, सीरियसली हगिंग एंड स्विंग कर रहे हैं, सीरियसली स्विंग कर रहे हैं। सर छोटे बच्चे हैं, 4-5 साल का एक और 6-7 साल का एक, तो कुछ अलग नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। आई डोंट थिंक एनी रॉन्ग इन इट। मैं नहीं सोचता, लेकिन पोइट का दिमाग कुछ और सोचता है, तो हमें तो पोइट के साथ सोचना है। पोइट क्या सोच रहा है उसको गो ऑन करते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। With every longer swing, she felt him in her longing pits. With every, I repeat, with every longer swing, she felt him in her longing pits. Sir, किसको felt कर रही है? It is something that we need to tell in details. मतलब सर details में बताऊं, मैं बोलूं sir, it is the genital part of a male that can be felt by the woman. Sir, genital part की बात कर रहे हैं due to that erection. Sir, what the hell you are talking about? Seriously, I mean. फैक्ट डिस्गस्टिंग यार, क्या बोल रहे, छोटा बच्चा, एंड हाउ कुड इट बी हैपन? मतलब मैं नहीं फील करता, मेरे दिमाग से अगर मैं बोलूं तो हाउ कुड इट बी पॉसिबल? सी दिस इज नॉट बीन पॉसिबल। बट पहले क्लियर करना, हम जब पोइट्री पढ़ते हैं ना तो हमें पोइट के पॉइंट से सोचना होता है, हम लोग अपना दिमाग नहीं चलाते। ये जरूरी होता है कि हम पोइट के पॉइंट व्यू को समझें, पोइट क्या बताना चाह रहा है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट हिज हिडन मीनिंग, व्हाट ही वाज ट्राइंग टू कन्वे। So we'll go according to poet now. So here come to the point. With every long swing, she felt him in her longing pits, all of feeling, and afterwards, we climbed a tree. She said. सर ट्री को जंप करते हैं, ट्री सिंबलाइज करती है। सर ट्री कई चीज सिंबलाइज कर रही है, अब यहाँ ये ट्री किसको सिंबलाइज कर रही है? We'll come to the point. We climbed a tree. She said, not every tall. I repeat, not very tall, but full of leaves, like those of the fig tree. Fig tree. अभी फिग ट्री तो मुझे एडम और ईव याद आते हैं। सर वो फिग ट्री के चारों घूम रहे थे, ठीक है। अच्छा, वो फिग ट्री के ही लीव्स थे जो उन्होंने अपने जेनिटल पार्ट्स पे कवर अप किए थे। तो सर ये क्या कहना चाह रहे हैं, सिंबलाइज क्या कहना चाह रहे हैं? तो याद रखना, जो पोएट लिखता है ना उसकी सोच उसकी पोएट्री में होती है। वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट एवरी पोएट इज टेलिंग समथिंग। तो वहां पे उसको समझने के लिए मुझे उसकी सोच को पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे जो पोएट है ना हमारा, वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। व्हाट ही वाज ट्राइंग टू कन्वे, he was trying to convey the sexual feeling that these kids now when they become older, become adult, now having that, तो उसको symbolize कर रहा है with their past। somehow मेरे को ये गलत लगा कि यार ये बहुत ही छोटे बच्चों के innocence को खत्म कर रहा है और वहां पे बात कर रहा है। but poet is trying to build the relation between here, not every tall, sorry, not very tall but full of leaves like those of the fig tree. And we were very innocent about it. Yeah, that's true. And we were very innocent about it क्योंकि सर वो एज इनोसेंस की, मैं आज की बात नहीं कर रहा ना, टोकना टुडे वर्ल्ड, लेकिन आज भी सर 5-6 साल के बच्चे तो इनोसेंस ही होते हैं, they are innocent. Now she looks for the string in a cities with 15 nerves and tries to be innocent about it. अच्छा सर आज वो बड़ी हो चुकी है। अगर मैं बोलूँ आज वो सर ऑलमोस्ट she was around 15 to 16, तो आज वो बच्चे नहीं है। today she can feel that thing, seriously she can feel that. अब
यहां पे आज वो फिर स्विंग को ढूंढ रही है. शी वॉन्ट टू हैव दैट स्विंग अगेन. शी वॉन्ट टू हैव दैट स्विंग. स्विंग कैसे सर, किस तरह? कम टू द पॉइंट. एंड ट्राइज टू बी इनोसेंट अबाउट इट. हाँ, अगर आज वो बोले तो ट्राइज टू बी इनोसेंट होगी, आज इनोसेंट नहीं हो. Not only for the cock to look at clutch of a tree that looks as it would be burst under every leaf into the broad of the scarlet figs if someone suddenly sneezed. Sir, क्या होगा, क्या changes हैं, किनको highlight कर रहा है? So looking for a cousin on a swing. क्या highlight किया? तो यहाँ पे आप लोग समझे, I hope आप समझे. पर अब आता है मैं explanation को, हम एक एक चीज को clear करेंगे. And I really want you guys to start writing now. Come to the point. The poet says when his cousin, I repeat, was 4 or 5 in age, she sat on a village swing along with her own cousin. Sir, उसकी खुद की cousin थी. Now, poet himself, who was about 6 or 7 in a, sir 6 or 7 था, against her. अब दोनों बैठ गए थे against each other. It means hugging each other and being on a swing. तो बच्चे कर सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है. On the swing, both of them come into contact with each other. With every launch of swing, she felt the poet in a longing pits or her feeling. So, what does mean by that? Listen carefully. This is something that the poet want to convey. With every launch of swing, she felt the poet in the longing pits of her feeling. The word launch is a pun. Pun that have two meanings: internal and external. Now, guys need to know what is internal and external. It means a sudden forward movement, a forward movement. What really he's trying to say with the forward movement, man? We need to feel that there was something that she was feeling. However, it also symbolized the arousal of sexual feeling which are innocent. Yeah, it is the arousal of sexual feeling, but on that time it was innocent, yeah. So we cannot say that it was a adult feeling. No, it was an innocent feeling. Then the word pits means lower abdomen. Pits means the lower abdomen. Now you can symbolize what he is trying to say. The word pits means the lower abdomen, which is regarded as the seat of strong feeling. Thus, launch and the pits are the erotic images which the poet uses to show that his cousin was sexually aroused and was enjoying. Yes, she was liking that movement or the phase of the time that was going on in that particular swing. सर इतना डिटेल में मैं एज अ रीडर नहीं समझ सकता था, बट व्हेन आई गो थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पोएट, देन आई गेट टू नो यार दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू कंसीडर. कम टू द पॉइंट. द गर्ल देन आस्क्ड द पोएट टू क्लिम्ब अ ट्री व्हिच इज नॉट वेरी टॉल बट फुल ऑफ लीव्स लाइक दोज ऑफ फिग ट्री. फिग ट्री कितना कंपेयर कर दिया उसे. In the childhood, the poet and his cousin were very innocent about what they were doing on that tree in the leaves. अब क्या कर रहे थे उसने hidden कर दिया. They have not been mentioning that. उसने कहीं भी ये mention नहीं किया that what they were hiding, when they were hiding in the leaves of the tree, what they were doing. उसने पूरी तरह clear कर दिया और यहाँ उसने वो hide कर दिया पूरी तरह से. The stanza in a quite symbolic and deep, the image of the fig tree had been borrowed from the Bible, Adam and Eve. मैंने mention किया था शायद. For the first human on earth used to leave the fig tree to hide their genitals, as per Bible. Thus they matured from the innocence to sexual awareness. तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं that they are becoming mature from the innocence at the age of 4 or 5 or 6 or 7. What the hell you're talking about, man? They do have a sense while talking about this, but the poet had wrote this, so we need to feel it and then come to the point. Jump to the next one. Another important thing to notice here is that the shift from the third person, that will first to third, or the first person in stanza, the poet very cleverly makes it clear that the person he is talking about is none but he himself. मैं clear कर रहा हूँ, वो अपनी ही बात कर रहा था, किसी और की बात नहीं कर रहा था. Jump to the next one. The stanza shows the poet cousin at a later stage when she grown up and is mature now. Yeah, she is mature now. She is living in a city which is quite big. So big बता दी उसने, कई सारे घर हैं वहां पे, but she was searching a man. Actually, she was searching a partner on a swing. Oh, partner कौन सा होता है? That must be innocent. That must be her cousin again. The poet says that cousin now looks for the swing in a city. The word looks for symbolized for desire of swing. That means the sexual pleasure.
Yes, the sexual pleasure that she enjoys with the poet in her childhood, and she tries to be innocent about it. Acha, she enjoyed that thing, but she tries to be innocent. And when somebody use the word tries to be innocent, it means not innocent. She is trying to be innocent, which means that she is not innocent and the desires to be so. Secondly, she was having a strong sexual desire. Strong sexual desire which has not been fulfilled and is looking for the someone who would fulfill this desire. देख लीजिए कोई होना चाहिए जो उस desire को पूरा करे. Come to the point. She desires to be the crotch, I repeat, on the crotch of the tree which looked as if it would be burst under every leaf into a broad of scarlet figs. So again, this is hidden meaning that was being mentioned. If someone suddenly sneezes, the lines are symbolic. The crotch of the tree here refers to a crotch. Bursting under every leaf into a broad of scarlet figs refers to desire for sexual encounter with someone to get fertilized. That means they need to be fertilized. They need to have a certain next level. The word sneezing, according to Kalistan, means the touching of the genital in certain Hindu communities. Here the poem ends in longing for the sex. So this what the poet tries to tell you guys. I hope यहाँ पे हमें पूरी पोइट्री की हुई हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया. सर काफी सारी पोइट्रीज बाकी हैं, अभी तो 2-4 ही हुई. तो वेटिंग फॉर वॉच द नेक्स्ट पोइट्री. करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट नोटिफिकेशन बटन. एंड हाँ, अपकमिंग वीडियो अगेन फॉर द पोइट्री सेक्शन. तो करना क्या है, लगे रहो.